Hello students, I hope you all are fine and I am expecting that you have done first chapter along with a worksheet. Now today we will discuss second chapter, that is forms of business organization. Let me introduce about this chapter. A business enterprise is an organization which is engaged in some business or commercial activity. Every business enterprise is a separate and distinct unit of business. So there are so many forms of organization that one can choose, that is sole proprietorship, joint Hindu family business, cooperative societies, partnership, and the last joint stock company. Today we will discuss first topic, that is sole proprietorship. What is sole proprietorship? Let me introduce the meaning of sole proprietorship. A business owned, managed and controlled by a single individual is known as sole proprietorship organization. वो ऑर्गेनाइजेशन जो एक अकेला बंदा ही उसका मालिक होता है, वही उसको कंट्रोल करता है, वही उसको मैनेज करता है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप है. लेट्स डिस्कस फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. फर्स्ट पॉइंट हियर इज फॉर्मेशन एंड क्लोजर, लाइबिलिटी, sole risk bearer and profit recipient, control, no separate entity, lack of business continuity. Formation and closure, इसका हम मीनिंग क्लियर करेंगे यहाँ पे. There is no separate law that governs sole proprietorship. सोल प्रोप्राइटरशिप को गवर्न करने के लिए कोई अलग से लॉ नहीं बना हुआ. बहुत ही रेयर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं सोल प्रोप्राइटरशिप को स्टार्ट करने के लिए, और बहुत ही रेयर केसेस में लाइसेंस लेना पड़ता है. अदरवाइज देयर इज़ नो मच फॉर्मेलिटीज़ फॉर इट्स फॉर्मेशन एज वेल एज इट्स सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट. The risk of failure of business is borne all alone by sole proprietor. However, if business is successful, the proprietor enjoy all the benefits. He receive all the profits which become a direct reward for his risk bearing. जो भी उसने रिस्क लिए हैं, प्रॉफिट भी उसको अकेले को मिलेगा, और अगर कोई लॉस है तो वो भी उसको अकेले को ही बेयर करना पड़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे है लिमिटेड लाइबिलिटी. सोल प्रोप्राइटर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी. अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या है? लाइबिलिटी की कोई लिमिट नहीं है. दिस इम्प्लाइज दैट ऑनर इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ डेट्स इन केस द एसेट्स ऑफ बिजनेस आर नॉट सफिशिएंट टू मीट द डेट्स. अगर बिजनेस के एसेट्स कम पड़ जाते हैं, इफ बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू पे लाइबिलिटी, टू पे आउटसाइड डेट्स, then owner is personally liable for payment. Let me clear you this with an example. Suppose total outside liability of sole trader are rupees 6 lakh at the time of dissolution. Write down the meaning of dissolution in your notebook. That dissolution means when the business is ending. जब हमारा business बंद हो रहा है तो उस टाइम पे हमने outside liabilities जो है 6 लाख रुपीज़ पे करनी है, पर इसके जो assets हैं वो सिर्फ 4 लाख रुपीज़ हैं. उस केस में प्रोप्राइटर को 2 लाख रुपीज़ अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से पे करना होगा. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज कंट्रोल. द राइट टू रन बिजनेस एंड मेक ऑल डिसीजंस लाइज एब्सोल्युटली विद द सोल प्रोप्राइटर. ही कैन कैरी आउट हिज प्लान्स विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर्स. यानी कि उसका जो बिजनेस है उसको खुद ही मैनेज करना है, खुद ही कंट्रोल करना है. देयर इज नो अनदर पर्सन हु विल इंटरफेयर इन डिसीजन मेकिंग ऑफ sole proprietor business. Next point is no separate entity. In the eyes of law, no difference is made between sole trader and his business, as business does not have an identity separate from owner. इस केस में ऑनर और बिजनेसमैन को सेम ही माना जाता है. जो भी एक्टिविटीज़ ऑनर कर रहा है बिजनेस के लिए, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज़ ही इज़ डूइंग. ये पॉइंट मैं आपको कंपेयर करना चाहती हूँ. अकाउंट्स में एक आपका टॉपिक आएगा, कॉन्सेप्ट है business entity concept, but that point is different from business entity concept because in business entity concept there is difference between owner and manager. Owner and business में और business दो अलग अलग separate entities मानी जाती हैं, but यहाँ पे सेम ही माना कंसीडर किया जाता है sole proprietor के केस में. Next point here is lack of business continuity. The sole proprietorship business owned and controlled by one person. So if any kind of uncertainty arise, for example, if a sole trader, sole proprietor dies or get mentally upset, that is insanity, right?
if he gets any kind of imprisonment, if he is physically not well, if he becomes bankrupt. Bankrupt means when he is not able to pay outside liabilities, उसका business down चला गया है and he is not in a position to clear all the debts. That condition is bankruptcy, right? If any of this condition will happen to sole proprietor, it will have direct and detrimental effect on business and may even cause closure of the business. Now let's discuss merits of sole proprietorship. Here the first point is quick decision making. Quick decision, as he need not to consult any another person for making any kind of decision, so he can take decisions very quickly. Second point is confidentiality of information. He can keep information very secret. Direct incentive, whatever the efforts he or she is doing in his business will be directly benefited to him. Whatever the rewards or profits arise in business, he will directly get benefit of that. नेक्स्ट पॉइंट इज सेंस ऑफ accomplishment. सेंस ऑफ accomplishment का मतलब क्या है? वट एवर द वर्क ही और शी हैज़ टू डू, there is a responsibility of oneself to complete it immediately. Now the next point is ease of formation and closure. As you have discussed this point in features as well, it is very easy to start a sole proprietorship business and easy to close this business as there is no much legal formalities. Now I am discussing all these points in detail. Here the first point is quick decision making. Sole trader, sole proprietor enjoys considerable degree of freedom in making decisions. Decision making is prompt. Prompt means very quickly because there is no need to consult others. This may lead to timely capitalization of market opportunities. Whatever the market opportunities arise, he can capitalize, he can utilize that immediately. Next point, confidentiality of information. A sole proprietor can keep all the business information confidential and maintain secrecy, as he is not bound by law to publish accounts of his business. इस पॉइंट का मीनिंग मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ डिटेल में, जो हम आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी का। इस पॉइंट को उसके साथ कंपेयर किया गया। जॉइंट स्टॉक कंपनी में कंपनी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पब्लिकली पब्लिश करना पड़ता है, बट उससे कंपेयर करें तो इसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसने अपने अकाउंट्स को पब्लिश करना है, तो इसलिए यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखा जा सकता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज direct incentive. A sole proprietor directly gets the benefit of his efforts as he is sole recipient of all the profits. Whatever the efforts made by him or her will be directly benefited to him because whatever the hard work he or she is doing, all the profits will be received by him only. Next point here is sense of accomplishment. There is personal satisfaction involved in working for oneself. जब कोई काम अपने लिए करते तो उसको बहुत satisfaction होती है that the work done by him is for himself. The business is successful, it contributes to self satisfaction. Business भी successful हो जाता है और उसको खुद को भी satisfaction हो जाती है, उसको एक ऐसी feeling develop हो जाती है कि मैंने अपना काम finish कर लिया है. I have finished my own work, I have accomplished my work. Right, the next point is ease of formation and closure. Important merit of this business is possibility of entering into business with minimal legal formalities. There is no separate law that governs this business, no much legal formalities to start this business as it can be started by the wish of owner. Now here are some limitations of sole proprietorship business as well. Limited resources, limited life of business concern, unlimited liability, managerial ability भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, limited managerial ability. Here the first point in detail is limited resources. Resources of sole proprietors are limited to her personal saving and borrowings from others. जो भी उनके पास अपनी सेविंग्स हैं या वो थोड़ा बहुत फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स से जो वो बोरो कर लेते हैं. Banks and other financial institutions hesitate to extend a long-term loan to a sole proprietor. सोल प्रोप्राइटर को बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से कोई खास हेल्प नहीं मिलती. दे हेजिटेट टू प्रोवाइड लोन्स बिकॉज सोल ट्रेडर, सोल प्रोप्राइटर lack resources. This is a major reason why size of small business remains small. Next point is limited life of business concern. As we know, if a sole trader, if a sole businessman gets any kind of problem, like if suddenly he dies
get mentally upset or get any kind of imprisonment or get any kind of physical ailment or become bankrupt. In any of the cases, it will lead to closure of business. It will not be possible to continue business. Only in one case, if the business is inherited to another person, his nominee. But most of the cases, there is no much big life, maximum life of business concern in case of sole proprietor. The next point here is unlimited liability. A major disadvantage of sole proprietorship is that owner has unlimited liability. If the business fails, the creditors can recover their dues not merely from business assets but also from personal assets of proprietor. So this is the major problem, that personal assets are also being utilized to pay outside liability. Here the next point is limited managerial ability. Owner has to assume the responsibilities of various managerial tasks such as purchasing, selling, financing. जो भी सारी एक्टिविटीज हैं उसको अकेले को ही मैनेज करनी पड़ेंगी. So it is rare to find an individual who excels in all these areas. It is difficult to find a person who is expert in each and every activity. This decision making cannot be balanced, and also due to limited resources, sole proprietor cannot employ much talented employees as well. So in brief, let's discuss advantages and disadvantages that we have discussed recently. Advantages here is easy formation, taxation, prompt decision and easy dissolution. Prompt decision क्विकली लिए जा सकते हैं, और डिसोल्यूशन मीन्स बिजनेस को बंद करना इजी है, टैक्स इसके ऊपर बहुत कम लगता है, रेयर ही लगता है, राइट, और इसको इजीली फॉर्म किया जा सकता है, इजीली फॉर्मेट किया जा सकता है. डिसएडवांटेजेस, लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से ये ज़्यादा लार्ज स्केल पे नहीं ले जाया जा सकता. अगर सोल प्रोप्राइटर को कोई डेथ हो जाती है या मेंटली अपसेट हो जाता है या फिर कोई भी अनदर अनसर्टेनिटी आ जाती है तो बिजनेस का कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए इसकी बिजनेस की लाइफ बहुत कम होती है. अनलिमिटेड लाइबिलिटी में हमने डिस्कस किया आउटसाइड लाइबिलिटी, बट जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसको आउटसाइड डेट्स को पे करने के लिए अपने पर्सनल एसेट्स को भी यूटिलाइज करना पड़ता है. उसकी अपनी पर्सनल कार, अपना पर्सनल घर, वो सब कुछ सेल करके डेट्स को क्लियर करना पड़ता है. स्केल ऑफ बिजनेस इतना ज़्यादा लार्ज नहीं होता और ना ही बिजनेस बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट और टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकता है. फॉर द नेक्स्ट टॉपिक सी द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.